So hey everyone, good evening again. Now we are coming live for the second time because the first time we are facing the audio issue. Quickly confirm me, is my audio is clear now or not? So we can quickly start today's discussion. Okay, in the beginning only let me confirm few things that this month 10 of our students got interview for fresher role. Okay, in this month only. So a lot of people might have this question, right? कि sir interviews का क्या? So what I found 2023 में थोड़े interviews कम थे, but in the beginning of 2024 जैन से काफी interviews निकले, जैन और फैब में. Okay? Currently अभी interviews चल रहे हैं. फाइजर का भी इंटरव्यू इंटर्नशिप का थोड़ी दिन में स्टार्ट होने वाला है, मे बी दिस मंथ एंड और नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली. सो हाँ, दिस ईयर इन द बिगिनिंग इंटरव्यूज निकले हैं फ्रेशर के लिए अच्छे खासे, टू बी ट्रू. And guys, quickly confirm me, अब मेरा audio, like, is my audio is clear or not to all? It's very clear now or like previous, like थोड़ा बहुत fuzzy आ रहा है या अभी एकदम clear है? Just confirm me. So guys, last time what happened, जो मेरी वॉइस थी ना वो माइक से नहीं आ रही थी, जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ वो कंप्यूटर के माइक से आ रही थी. ठीक है, ये माइक मतलब कनेक्ट, मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करना शायद भूल गया था, इसीलिए बिगनिंग से ही. सो कभी भी आप सेशन ज्वाइन करते हो, अगर बिगनिंग से ऑडियो और वीडियो इश्यू है थोड़ा भी, तो मुझे बिगनिंग में बता दो. ओके ओके, साउंड्स गुड, लेट्स कंटिन्यू. Rani is asking abroad chances after learning clinical science. That is like a good question. See, one of the benefit of learning clinical science is the opportunities in abroad. Okay, you can go to any like country like US, Canada, or European. You'll get job over there, and salaries are great. You can even search on internet. And if you have confusion, even if you can search statistical programmer Netherlands, statistical programmer Canada, or statistical programmer USA. You'll get a lot of people, they are working over there. In India also, if you get a job in CRO, 90% of project people are working in India. That project is coming from abroad only. The clients are in abroad only. The site is in abroad only. You are going to deal with people, they are in abroad only. So already like the work you are doing, that is coming from US, Canada, China, or different countries. So okay, Ajay का एक important question आया कि sir today I book a meeting at you 1:30 1-to-1 counseling at TopMate, but you was not connecting. Ajay, what I'll do, just after this live discussion I'll call you. Okay, I have your number actually, but what happened today, some meeting clashed. क्या हुआ था कि मुझे अचानक से कुछ मीटिंग्स लेनी पड़ी उस टाइम पे, सडन मीटिंग्स, इसकी वजह से हमारी मीटिंग छूट गई. बट मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर दिस लाइव सेशन you'll get a call from me. राहुल, क्लिनिकल साइंस की जॉब में स्ट्रेस कितना रहता है? राहुल एक चीज बोलूं, देखो स्ट्रेस सारी जॉब में रहता है, बट सही बोलूं तो क्लिनिकल साइंस की जॉब में उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता. स्ट्रेस ज्यादा नहीं है और पे ज्यादा है, दैट इज द बेनिफिट. बाकी ऐसी कोई जॉब नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है जिसमें आपको स्ट्रेस ना हो. स्ट्रेस क्या होता है? जब आपको प्रॉब्लम होती है तब आपको स्ट्रेस आता है. जब आपको प्रॉब्लम नहीं आती, वो काम आप कर लेते हो, तो आपको स्ट्रेस नहीं आता. हाँ, दूसरा स्ट्रेस ये बोल सकते हो ओवरवर्क. कोई कंपनी आपको कोई रोल पे बहुत काम दे रही है, तो हाँ, ये ऐसा रोल नहीं है कि आपको कंपनी ओवरवर्क दे. दिस इज अबाउट द क्वालिटी वर्क. कंपनी आपको बोल नहीं सकती कि इतने सारे कर दो, उनको पता है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं लूज हो जाएगी. तो
हाँ, मतलब जितना आपको पे मिलता है, ग्रोथ मिलता है, कंपेयर टू दैट द स्ट्रेस इज़ वेरी लो। आई कैन से दैट। ओके, सैम गैकवार्ड। सर फ्रेशर को कितना करंट सीटीसी लिखना चाहिए फ्रॉम मी? फ्रेशर को कितना करंट सीटीसी लिखना चाहिए फ्रॉम मी? See, एज़ अ फ्रेशर इट डिपेंड अपॉन द कंपनी साइज़, दैट कि कंपनी कितनी बड़ी है। एज़ अ फ्रेशर व्हाट आई बिलीव, आपको अगर कंपनी मिड साइज़ है तो 3 टू 5 के बीच में अज़्यूम करना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड कंपनी है उनका तो अच्छा खासा सैलरी होता है। कुछ कंपनीज़ का 5 भी है, कुछ कंपनीज़ का 8 टू 9 भी है। बट अगर वो एक मिड साइज़ कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, तो आपको 3 टू 5 के बीच में अज़्यूम करना चाहिए। एंड इनिशियली आपको सैलरी का उतना वरी मत करो। दीज़ आर डिमांडिंग रोल। डिमांडिंग रोल पे यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द एंट्री। एक बार एंट्री हो गई देन स्काई। खालिद रज़ा बोल रहे हैं, सर व्हाई डोंट यू शेयर योर ओपनिंग ऑन लिंक्डइन? आई हैव सीन योर लास्ट पोस्ट वाज़ 2 इयर्स अगो। खालिद एक्चुअली क्या था, जब मैंने इंडस्ट्री में एंट्री की, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने लिंक्डइन का यूज़ करना ही बंद कर दिया। टिल नाउ आई एम नॉट एक्टिव ऑन लिंक्डइन। अभी जस्ट हमने क्या किया, जो इंस्टीट्यूट है क्लिनिकल स्टडी एकेडमी, उसका हमने पेज बनाया, क्लिनिकल स्टडी एकेडमी का। अब हमने डिसाइड किया कि जितने भी स्टूडेंट हमारे पास्ट में सेलेक्ट हुए हैं या अभी सेलेक्ट हो रहे हैं, उनके ओपनिंग्स के रिलेटेड नहीं, उनके सिलेक्शंस के रिगार्डेड रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे, आई विल बी डूइंग दैट। So from last 2, 3 or 4 years, I'm not active on LinkedIn actually. Actually क्या होता है, if I have to tell truth, Khalid, you are like most probably a person will be LinkedIn like active on LinkedIn at the time of looking for jobs. The next time he'll be like active on LinkedIn if we have to just check some updates. What happened for me? I already got the job long back. I have a lot of work to do. On top of that, फिर मैंने वो जॉब क्विट की एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। सो अ लॉट ऑफ वर्क, डेली मेरा कम्युनिकेशन होता रहता है, कभी वर्किंग प्रोफेशनल से, कभी फ्रेशर से। वहाँ का यूज़ मैंने कम कर दिया, बट रिसेंटली लाइक हमने फोकस किया है। वी बिल्ड अ वेबसाइट एज़ वेल ऑफ आवर इंस्टीट्यूट clinicalstudyacademy.com, and we made a page as well on LinkedIn, CSA, Clinical Study Academy. Marba, as per your request, I have played the song. Just confirm me, is it audible or not? Can I start learning SaaS along with pharmacy? Of course, why not? Abhiroop, sir, how is the future scope in Salesforce? I'm studying Salesforce. That is good. See, once you start something, now you don't need to worry about. What I believe, even something is low now, you can reach to the top 20% of that. Salesforce is a good software, so you don't need to worry for sure. Salesforce, SAP, these are the leaders in ERP as of now. So you don't need to worry about the salaries. Just cut an entry. You need to focus on that only. सैम सर, मतलब तो मैं जब मैं एक एक्सपीरियंस डालते हैं तो वहाँ पर करंट सीटीसी पूछता है ना एक्सेप्टेड, तो करंट कितना डालना है? अच्छा, देखो 6 मंथ की इंटर्नशिप में आप कंपनी से कितना ही मांगोगे? मेरा ऐसा मानना है कि अगर 6 महीने, अगर आप 1-2 साल का फेक डाल रहे हो, इफ यू आर पुटिंग 1-2 ईयर ऑफ फेक, देन यू माइट बी अज्यूमिंग कि मुझे हाई सैलरी चाहिए होगी। 6 महीने पे लाइक व्हाट कैन यू अज्यूम अ मैक्स?
M&A पे मैं ऐसा बोलूँगा जो भी बेस्ट मिलेगा जस्ट जॉब ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद आप सीटीसी का देखना। दिस इज़ व्हाट माय सजेशन। Ganesh Gore, how are you, Subham sir? Hey Ganesh, I'm great. How about you? Sam, कितना लिखे सीटीसी? ये एज़ अ 6 मंथ्स कितना अच्छा देखो कितना लिखे सीटीसी 6 मंथ्स पे लिख दो 4 एलपीए, ठीक है? अगर आपको पता है इंटर्नशिप भी की है आपने, इंटर्नशिप में आपको सैलरी मिली नहीं है मोस्ट प्रोबब्ली आई एम अज्यूमिंग, तो उस केस में मतलब 3, 4, 5 जो भी लिख सकते हो लिख लो बट 4 इज़ लाइक विजिबल। अगर सामने बड़ी कंपनी है जिसमें इंटरव्यू हो रहा है तो ज़्यादा लिख लो। सर एक्चुअली हैज़ कैंपस इन कोची केरला, उधर भी रिक्रूटमेंट होता है ना? Yes, Satish, होता है। I do remember my first interview was in IQVIA, Kochi actually, in Kerala only. I went there. It was physical interview. It was kind of mass recruitment, walk-in drive. So I went there and like I assumed like few people got selected for interview, but it was walking. A lot of people went there and there was a line. So line देख के मैं थोड़ा सा Satish, I got demotivated that this many people is coming for interview. I went there and what happened, I didn't prepared well. This was like 5 years back incidents, maybe. And the interview didn't went well because I didn't slept at night. So I have done like, I have done too much preparation. And what happened in the interview, they asked me aptitude and I was not ready for the aptitude. I was ready for the technical part. Because a lot of people they have called right walk in drive. So that's why they have done this aptitude and these things. And I was not ready for that. It didn't went well. I got rejected in the aptitude round itself. It was like 5 years back, I don't remember. 5 or 6 years back. राहुल मीना सर किसी ने अपनी लाइफ में अभी लैपटॉप चलाना स्टार्ट किया है तो उसे कितना टाइम लगेगा क्लिनिकल सैस सीखने में और जॉब क्रैक करने में? देखो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया राहुल जिनको लैपटॉप भी चलाना नहीं आता था। उन्हें सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने लगे। कितने? 5 से 6 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? इट डिपेंड अपॉन द ट्रेनर कहाँ से आप सीख रहे हो योर सोर्स। सुरेंद्र फ्रॉम 32 years age BTech again I want to software job. I have no experience in any field. Can I get job? Surendra, you can get. The only thing is you need to focus on one thing. Grab the knowledge. See on like choose one role that is in demand. Okay, choose that role and figure out what are the skills required on that role and make yourself best in those skills. Be the best. If not the best, try to be the 30%, top 30%. And people like making yourself like a top 30%. If you are very clear, this role I have to, on this role I have to get the job. You are like learning the skill in a very well way. You're doing some small projects as well, then you're good to go. Marba is selling. I cannot hear the song. Is it? Okay, Marba. First of all, you can suggest me a song you want to hear. Okay, Samir. Sir, what about your course? What about my course? Means I didn't got it. Which course? We have two courses, Clinical SaaS and Clinical SaaS plus Data Science, Clinical SaaS 2.0. Which one you're talking about?
It's Sharadia. Sir, can you define skills? Skills for what? See, there are two types of skill. Journal skill one need to have for any of the demanding roles. And then there is technical skill that is specific to the role you are going to work. Like communication skill. That is what very first thing you need to have. Your English, how you are behaving, how you are talking. These are some journal skills. Technical skills can be, let's suppose you are preparing for clinical SaaS role. So SaaS based and advanced knowledge, clinical knowledge, SDM Adam table listing knowledge. These can be the technical skills. सैम बोले सर बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ in more than 1 month I got interview only got email from company regularly applying part पर focus कर रहा हूँ see सैम टू बी ट्रू आपने अगर मेरी वीडियोस देखते हो सैम तो मैंने काफी बार बताया कि कम से कम आपको 3-4 महीने कंटिन्यूअसली अप्लाई करना चाहिए फिर जब आप तीसरे चौथे महीने में पहुंचते हो ना तब आपको अज्यूम करना चाहिए कि अब मुझे अच्छे खासे इंटरव्यू मिलेंगे 1 मंथ तो बहुत कम टाइम नहीं हो गया सैम क्योंकि आपसे पहले से भी काफी लोग अप्लाई कर रहे होंगे ठीक है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है सैम आपको बस ये समझने की जरूरत है जो अप्लाइंग पार्ट है ना इसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं इंटरव्यू मिलने और क्रैक करने में बट हाँ ऐसा अज्यूम कर सकते हो 3 से 4 महीने में आपको कुछ तो इंटरव्यू मिलेंगे और आप शायद मोस्ट प्रॉब्ली क्रैक कर ही दोगे अगर आप मतलब अच्छे से मेहनत कर रहे हो सो यस कृष्णा Clinical Study Academy, CSA. You can search on LinkedIn. And there is a website as well. Summit Clinical SaaS 2.0. In this course, you are going to learn the major focus will be in SaaS and R. And then we'll be learning Python as well, SQL as well, and Power BI as well. But the major focus will be on SaaS and R. SaaS based advanced and clinical, and then R software. Okay. Adi Salim, hi sir. Hi sir, I studied SaaS for 3 months and I joined class. But after that, I got a job as a medical coder and pursuing should be proficient in this field or change any domain to SaaS. See guys, now what can happen? Let's suppose if you're learning for clinical SaaS role and meanwhile you got any other job. Okay, you are actively looking for clinical SaaS job, but within 1-2 months you didn't got the clinical SaaS job. You got some another job. And what you did because you felt okay, let's not sit idly, let's grab a job and meanwhile we keep applying for clinical as well. Let's suppose if you grab that job you joined, so you should switch or you should look for the SaaS or not. Yes, you should. You have learned SaaS, you should keep applying. Once you crack the interview, just switch it. That's all. Fulfill the purpose. Okay.
Okay. Can I learn clinical science and start my career? Yes, of course. Others is asking for how much you charge in SaaS course. Others, for that you can connect to me. We can have a discussion and I can tell you about the fees as well. Chino, what would be the next batch of clinical science programming start? I'm interested to join. Chino, you can connect to me through one-to-one counseling, and there we can discuss about the detail of the course and even the start date as well, and about fees, each and everything. सैम, सर लिंक्डइन पे वीकली लिमिट खत्म हो जाती है एक दिन में, तो लिंक्डइन पे प्रीमियम ले ले क्या ज़्यादा अप्लाई पार्ट पे फोकस करने के लिए? सी 1 मंथ का तो वैसे भी फ्री प्रीमियम मिलता है, तो आप ले सकते हो, बट मेरा सजेशन है कि जब आपका लिंक्डइन की लिमिट खत्म हो जाए, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्टार्ट रीचिंग आउट ऑन मेल आईडीज़। आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज ने व्हाट दे हैव डन, दे हैव पुट वैकेंसी फॉर सीनियर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 1, and they have given a mail if you are interested for statistical programmer 1 or 2, pull your details on this mail id. You got to know these are the mail ids where they are hiring for statistical. You know that that vacancy was not for fresher, but you can still like collect those mail ids and you can send your cv. Sir, I am from fresher. If you are having any fresher vacancy, please consider my cv. Okay, at least your time will be not wasted. This is what you can try an alternate. You can try out on the company's website as well. Narla, I don't feel like R can replace SAS, but yeah, like along with SAS, maybe in the future, R will also like they will also use R as well in the clinical. This is what I feel. Krishna, founded sir, I have given you connection request on LinkedIn, sir. Can you please accept? Sure, Krishna. Narla, of course, 99.9% as a fresher, you have to start your journey with SAS only. Right now, 90% of interviews, they are asking SAS knowledge only, base, advanced, and clinical. Others are, I have so much distraction in my life. Please give me at least one reason to focus studies. Others, if I have to give one reason to you, just remember the bad days you have faced. If you haven't, let me tell you, in the world, no one is going to help you in the coming days. If you are unable to make your career now, you're gonna see the worst time of your life. You're gonna see it. You're gonna face it. No, people say it money is not that much important. Even I was thinking 4 5 years back the same way. Then I got to know the importance of money, the importance of good career. A good career is something like that gives you flexibility, that gives you wings. If you don't have a good career, if you're not making good money in your life, being happy in this current era, forget it. For every second thing you need money. If you don't have money, if you don't have good career, you have to compromise your whole life in the coming days. Either you are living alone, either you are like getting married in the coming days. See yourself, what you how a life you want. Do you want to compromise in the coming days? Do you want your family to be compromised? Okay, do you want the future generation, they should not have the exposure of good things? So believe me, in the current era, money is important, and a good career is important. A good career will give you that capability to reach to the highest level in the monetary benefit, and you will earn good money. So that's why a good career is very important. Khalid is telling, sir, in your academy page there is no post regarding openings. Khalid, just it's been week only we created that page and website. That page is ready, but there is no post. I still believe, but in the coming days we'll start posting on the page.
ओके। सैम पूछ रहे हैं सर फाइज़र का कब से चालू होगा इंटरव्यूज़? देखो मुझे लगता है कि इस मंथ में कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर इस मंथ में नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो ही जाएगा फॉर श्योर। हुँ, खाली टिल नाउ आई डिडन्ट थॉट अबाउट एनीथिंग कि ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे पोस्ट करने का। क्योंकि लेट्स सपोज़ इफ सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग इंटरव्यू, उनको इंटरव्यू मिला है, ठीक है? अगर वो मैं चीज़ पोस्ट कर देता हूँ एट अ टाइम ऑन ओपन प्लेटफ़ॉर्म, द कंपटीशन इंक्रीज़, राइट? लेट्स सपोज़ जो अपने स्टूडेंट्स सेलेक्ट होने वाले होंगे तो उनके चांसेस कम हो जाएँगे। दैट्स अ प्रॉब्लम विथ मी। बीइंग एज़ अ ट्रेनर मेरे लिए प्रायोरिटी होता है कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको पहले इंटरव्यूज़ मिले या जो भी होता है। So I cannot share that information to outside. That's what the problem. Once the selection is done, interview is done, then I can share. That is the thing. ZP is selling. I'm 40 years old. Shall I learn clinical sales? Can I start my career? I don't have experience. ZP, just share more about you. Like, did you worked on somewhere? Do you like done some business in the past? How it is? I need a little more clarity. Sam, सर इन्फोसिस में 20 दिन पहले अप्लाई किया और अभी तक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। सी कुछ बड़ी कंपनियाज़ हैं ना, जिनके पास एप्लीकेशन अच्छे खासे कलेक्ट हो जाते हैं। वैसे तो आजकल फ्रेशर की ओपनिंग में सारी कंपनियों में काफ़ी सारे लाइक सीवीज़ कलेक्ट होते होंगे। दे विल बी लाइक गेटिंग अ लॉट ऑफ सीवीज़ फ्रॉम द स्टूडेंट। So maybe for the filtration and those things, they might take some time. Sometimes they take 1 month of time, okay, for the filtration. Have you left the industry, clinical sales industry? Satish, I'm not going to leave this industry for sure. But one thing I can say, 2000, Satish, my target is in 2025 to start a CRO company. Not that much big, but at least with some projects. I'm not going to leave this industry. Right now, we are ensuring the training part, a little bit of the placement part. Next year, starting a company, a CRO company. And teaching is my passion, like guiding people, helping them, teaching. This is my like. This is very general. I met with and like I'll met with any person. I'll surely guide him. I'll surely give him some guidance if they are in need. This is my passion. Jackie Shahid, sir, farmer student should I get advantage? Of course, why not? सैम, तो 2025 में मुझे ज़रूर सैम, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ले लो आप। ये 2025 में थोड़ा टाइम है ना, तब तक तो कहीं न कहीं अभी तो मुझे लगता है 2024 में आपको जॉब मिल जाएगी फॉर श्योर। तो तब तक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा फॉर श्योर। मुझे कनेक्ट करना है 2025 में। सर आपको ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन से या स्पेशल कनेक्शन से आती है। मुझे सी
अभी क्या हुआ खालिद, व्हाट हैपेंड कि पहले म जब मैं जॉब ढूँढ रहा था, आई शेयर माय जर्नी। जब मेरी लाइफ में मैंने जॉब ढूँढना स्टार्ट किया क्लिनिकल साइंस में, तब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लाइक यू गाइस। आई वाज़ लुकिंग फॉर हियर एंड देयर, एवरीवेयर, लाइक ऑन यूट्यूब। तब मैं बहुत एक्टिव था। जब मुझे जॉब मिल गई, तो लिंक्डइन मैंने यूज़ करना कम कर दिया, ठीक है? काफ़ी कम कर दिया। फिर आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द सैलरी। कुछ महीने तो ऐसा था, मतलब कौन सी कंपनी कितना सैलरी दे रही है, यूएस में कितनी सैलरी मिल रही है। आई गॉट टू मच क्यूरियस, एज़ अ फ्रेशर। हर बंदे के मन में क्यूरियोसिटी होती है, कितनी सैलरी मिल रही है, काइंड ऑफ दोज़ थिंग्स। आई स्टार्टेड लुकिंग सैलरीज़ ऑन इंटरनेट कि हाउ मच इन लाइक यूएस पीपल आर गेटिंग एज़ अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। So from LinkedIn, my focus went to Google and I started looking for salaries. Then I started like attending some of the interview. I started like whenever HR after few months HR and each and every company HR started calling me. Not only to me, they might have some hiring and they started calling all the people with some experience. So I started asking them the salaries and these things. And after like a few years, I started feeling like, or after a few months, I started feeling that I should try something else. And I got an opportunity that not only opportunity, मुझे ऐसा महसूस हुआ that this teaching part, I'm getting more interested into it. मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जब मैंने ये जॉब क्विट की थी, तब मेरी सैलरी अराउंड 3 एलपीए थी और उस वक़्त पे मुझे एक ऑफ़र मिला था दूसरी कंपनी से अराउंड 9.5 एलपीए का, ठीक है? तो मतलब मैंने वो ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है? नहीं एक्सेप्ट किया यानी वो इंटरव्यू भी नहीं दिया एंड आई थॉट लेट्स गिव अ ट्राई। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो जो मुझे जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग या गाइड करने में, लेट्स ट्राई दैट एंड आई स्टार्टेड दैट। तो मुझे जो अभी इन्फॉर्मेशन मिलती है खालिद, वो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे स्टूडेंट से मिलती है। स्टूडेंट्स के इंटरव्यू अरेंज होते हैं, राइट? बताते हैं कि सर ये कंपनी मेरा इंटरव्यू अरेंज हुआ है। जैसे अभी भी करंटली 3 कंपनियाँ इंटरव्यू ले रही हैं करंटली, और इस जैन और फ़ैब में ही हमारे 10 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू मिले, फ्रेशर्स को, मिनिमम 10 स्टूडेंट्स। सो या इसीलिए स्टूडेंट्स की बताई हुई इन्फॉर्मेशन है तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट इंक्रीज देयर कंपटीशन। हाँ, कभी कभार मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बट थोड़े टाइम बाद। सैम, टीचिंग मेरा पैशन है, कभी नहीं छूटेगा। टीचिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे ले आया है। तो जो आपका रूट है वो कभी नहीं छूटता आपसे। भूषण, which was your first company as a statistical programmer so that we can also apply? भूषण, मैंने ऑलरेडी I have made a video on YouTube that companies which hire fresher statistical programmer, go and check. There I have shared a list of some of my students who got selected as a fresher, कौन सी कंपनी में सेलेक्ट हुए, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैंने शेयर किया है वहाँ पे, तो यू कैन गो एंड चेक। मोहम्मद, आईटी कंपनी में कम, आईटी आईटी में कंपटीशन कब कम होगा? मोहम्मद देखो, वक्त के साथ इंसान को मजबूत बनना पड़ता है, कंपटीशन कम नहीं होता। जैसे कि अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि गाड़ियाँ कब बुरी बनना शुरू होगी, गाड़ियाँ अच्छी ही बनेगी। अब जो अच्छी गाड़ियाँ बनाएगा, उसकी गाड़ियाँ लोग खरीदेंगे। मोहम्मद, दिस इज़ एन ब्रूटल ट्रुथ। तो जैसे-जैसे कंपटीशन बढ़ता है, तो कंपटीशन अच्छे के लिए होता है, हमें थोड़ा और बेटर करना पड़ता है। आपको फ़ायदा हो जाता है बट मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है, दैट इज़ अ ट्रुथ मोहम्मद। सैम पूछ रहे सर, आप ये बात मानते हो कि नहीं 2 साल पहले? देखो सैम, मैं एक बात बोलूँगा, जब मैं खुद जॉब ढूँढ रहा था ना, तब मेरी हालत खराब हो गई थी, क्लिनिकल साइंस की। ऐसी सिचुएशन थी कि आई कैन नॉट आस्क एनीवन, मैं किसको क्या पूछूँ, किसको क्या बताऊँ? ऐसी सिचुएशन थी। व्हेन आई वाज़ लूकिंग फॉर जॉब, 2 साल पहले छोड़ दो, 4-5 साल पहले की बात करते हैं।
तब भी कंपटीशन था। फिर मैंने लिंक्डइन पूरा हर जगह चेक किया तो किसी ने नेगेटिव पोस्ट किया था, किसी ने पोस्ट किया था पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव पोस्ट काफ़ी थे। उस टाइम पे ऐसा था कि इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा या इसमें जॉब्स नहीं है। बट मैंने अपनी जो होप होती है ना वो नहीं छोड़ी और मैंने खुद को समझा कि जैसे मेरा बैकग्राउंड दूसरा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड आई बिलॉन्ग फ्रॉम मैकेनिकल राइट? तो मेरे लिए जर्नी ईज़ी नहीं होगी और क्योंकि मुझे थोड़ा गैप भी था, मे बी 1 ईयर या उससे ज़्यादा, मुझे पता था मेरे लिए जर्नी ईज़ी नहीं होगी। मुझे थोड़ा टाइम लगा, 1 साल का टाइम लग गया। क्यों 1 साल का टाइम लग गया? क्योंकि मैं बीच में एक जॉब भी कर रहा था एंड वो जॉब छोड़ी, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पैंडेमिक का भी थोड़ा वो था। तो मुझे टाइम लगा बट या थिंग्स वेंट वेल। एक बार स्टार्ट हुई तो मतलब मैं यहाँ से सीधा उठ के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे था मैं, मुझे पता नहीं चल रहा था यहाँ से इतना भी कैसे आऊँ। सैम यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा था यहाँ तक कैसे आऊँ। लेकिन मैं लगा रहा और यहाँ से सीधा यहाँ आ गया। ये जो बॉक्स था ना उसके बाहर चला गया, काइंड ऑफ। तो लाइफ ऐसे ही काम करती है, आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परीक्षा होती है। अब लोग मुझसे जब आज पूछते हैं ना कि मतलब कंपटीशन है ये, आप इतना काम क्यों, आप ऐसा क्यों बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, पॉजिटिव क्यों बोलते हो? भाई मैंने खुद ने कंपटीशन देखा है, मैं दूसरे को कैसे बोल दूँ? हाउ कैन आई टेल टू अदर्स दैट थिंग्स आर ईज़ी? I myself personally on this role, I have seen the competition 5 years back. If any demanding role is there in this world, if anything that is demanding, the competition will be high. That's the truth. So, Naveen is telling how much salary we can accept as a fresher, sir, from 3 LPA to 9 LPA. Khalid, you help your students to get job. Earlier I was not doing, but recently have started a little bit. Jackie, sir, should I have to start programming now after completing my degree? See, if you start like after your completion of degree, it will take another few months, maybe 8 months in getting job, 4 months in learning, 4 months in figuring out like how to become better. So it's better to start just now. Till the time you'll complete your education, you might be at better condition. मोहम्मद भाई 2023 से सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है। मोहम्मद मानो या ना मानो, सप्लाई तो मेरे और हाथ में नहीं है, मतलब मेरे और आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि रिसेशन होता है या सप्लाई होता है, किसी के हाथ में नहीं होता। ये कभी भी बढ़ सकता है किसी भी चीज़ में, राइट? बट मेरा ऐसा मानना है जो बंदा मन लगा के लग जाता है ना कि मुझे ये चीज़ निकालनी है तो निकाल लेता है। आई हैव सीन टू बी ट्रू। इफ यू हैव लाइक डिसाइडेड, अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये लेना ही है तो आप अपना रास्ता ढूँढ ही लोगे। यू विल फिगर आउट अ वे टू गेट इट एंड यू विल गेट इट। और हाँ मोहम्मद, ये बात सच है कि इंटरनेट का जैसे यूज़ बढ़ा है ना तो इंटरनेट से अवेयरनेस बढ़ गई है। तो कोई भी चीज़ अब हिडन नहीं रही। हर चीज़ें बाहर आ रही हैं, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। दैट इज़ ट्रू। Hi, Satish is asking, I have a cousin who was selected in 2012 at the age of 30. His first job was statistical programmer. Two. After 8 years, he moved to programmer analyst two. Programmer analyst two. How it can be possible? Within 8 years, he should be surely a senior or a lead or a principal. Principal or lead for sure. 8 years में तो Satish, a person can easily become senior and lead.
Can you just name the company? मोहम्मद, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद आईटी कोर्स कर लिया, 8 मंथ से ट्राई कर रहा हूँ अभी तक। जब मोहम्मद, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें गाइडेंस नहीं होता, हमें पता नहीं होता। हम कहीं से कोर्स तो कर लेते हैं, देयर इज अ लॉट मोर यू नीड टू नो एज एन फ्रेशर अपार्ट फ्रॉम द कोर्स। कोर्स के सिवा ऐसी बहुत सारी चीजें जाननी होती है, जैसे बिगिनिंग में जाननी होती है। सीखने में मुझे जॉब लगने में कितना टाइम लग जाएगा, अगर मार्केट बुरा भी हुआ तो भी मुझे कितना टाइम लग जाएगा, अगर मुझे जल्दी ही जॉब नहीं मिलती तो मैं उस वक्त क्या करूंगा, क्या एक्स वाई जेड चीजें हैं, मैं कैसे अपना टाइम वेस्ट ना करूं, कैसे मैं इंश्योर करूं कि मेरा सीवी इंटरव्यू तक पहुंचे, कैसे मैं इंश्योर करूं कि मेरा नॉलेज टॉप नॉच हो। कुछ अगर टिप्स शेयर करनी हो सो आई कैन शेयर। सी, जिस भी रोल की तैयारी कर रहे हो ना, उस रोल के सभी लोगों को कनेक्ट करो, उनसे पूछो कि सर क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो, सर क्या आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। लेट सपोज आपने 1000 लोगों को कनेक्ट किया, आपने उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा, रेफरल के लिए। इंटरव्यू रेफरल के लिए तो वैकेंसी होगी तभी आपको बोल सकते हैं, उसका आंसर यस बोल नहीं सकते, तो वो तो मोस्ट प्रॉब्ली विल लेट यू नो होता है। लेकिन आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या सर आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो, या कर मुझे बता सकते हो, क्योंकि आप इस रोल पे जॉब कर रहे हो, कैन यू गाइड मी कि एक फ्रेशर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने राउंड होते हैं, आपकी कंपनी में कितने राउंड होते हैं। ऐसा करने से एटलीस्ट आपको काफ़ी लोगों से सजेशंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ लोग आपका इंटरव्यू भी लेंगे। अगर 10-15 लोगों ने भी आपका इंटरव्यू ले लिया ना, आप टॉप नॉच हो जाओगे। आप टेक्निकल में यहाँ से सीधा यहाँ स्काई रॉकेट हो गए। बंदा क्या होता है पता है मोहम्मद, अकेले खुद से सवाल करता रहता है, सोचता है। अब आपका लेवल एज़ अ फ्रेशर कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्रेशर से सीख के, टेक्निकल सीख के यहाँ से यहाँ आए हो। आपका किसी सीनियर से कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस गाइडेंस होना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो आपका स्किल बढ़ाता जाता है। जितने ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन हुआ, गाइडेंस हुआ, उतना स्किल बढ़ता गया। खुद से अगर हम सवाल कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से हुआ? कैसे आप एन्श्योर कर रहे हो कि इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है मूवमेंट? थिंक अबाउट दैट। खालिद, आई मीन सर, यू आर अवेयर स्टूडेंट, अवेयर स्टूडेंट, स्पेशल कनेक्शंस समटाइम्स खालिद, समटाइम्स। स्पेशल कनेक्शन की क्या ज़रूरत है? देखो आज के टाइम पे खालिद एटलीस्ट कम से कम 30 स्टूडेंट्स में तो हम 30 कंपनीज में हमारे स्टूडेंट है ही मिनिमम, 32-35। तो उन 30 में से अगर मैं मतलब मुझे कहीं से पता चल गया तो मैं उनमें से बता देता हूँ, नहीं तो कभी कभार इंटरनल शेयरिंग कर देता हूँ, अगर मुझे कहीं और से पता चला तो। मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके सिवा भी। सर रिज्यूमे में प्रोजेक्ट कैसे एनलिस्ट करूँ? अगर आपने कोई स्टडी पे काम किया तो बताओ वो स्टडी का प्रोटोकॉल, मतलब टाइटल क्या था, स्टडी किस पे थी, कौन से फेज की स्टडी थी, सैंपल साइज कितना था, स्टडी ड्यूरेशन कितना था, आपने उस स्टडी में क्या किया। ऐसे 5-10 पॉइंट लिखो प्रोजेक्ट में, दिस विल श्योरली हेल्प यू। सतीश, what is the job role in joining and after which promotions took place? See, as a fresher, you will join as a trainee or associate. After 6 months, or after 6 months, most probably they'll give you a role of statistical programmer one. After 6 months or 1 year, okay, statistical programmer one. Again, after 1 or 1.5 years, statistical programmer two. Within 4 to 5 years, you will become senior statistical programmer. 6 to 7 or 8 years, you will become principal or lead. 8 to 9 or 10, you'll become associate manager, then manager, then senior manager, then associate director, director and senior director, then vice president and other roles. तो अगर आप अच्छे से काम करो तो आप 10-12 साल में या 13 साल में मतलब मैनेजर बन जाते हो इजीली, और सीनियर 5 साल में, 5 से 6 साल में, 5 to 7 में आराम से सीनियर बन जाते हो इजीली। Satish is telling cousin salary is 2 lakh per month. That's great.
Yani within 8 years, your cousin's salaries become 2 lakh per month. That's great if it is per month. See guys, in the comments Satish have shared that even people are getting 2 lakh per month and that's a good salary. So that's what a journey start, right? You start with 3 to 4 to 5 LPA per year and within few years you reach to 1 to 2 lakh per month. That's how life goes on this role. Saraswati. Hi sir, recently I completed my base advanced and clinical part. When will be the opening? Currently openings are there, Saraswati. Three companies are taking interview for freshers. Sam, please make a video on that. No Khalid, no need to update resume. Create a best CV, then start approaching to people. Take guidance. Ask them for referrals. I believe इंडिया में रह के आप 8 से 10 साल में 50 तक पहुंच सकते हो. Mr. Nitish, sir, can they ask PG degree for promotion? No, they'll not ask this. Based on your promotions, you can become director, vice president, all. Once you ex- Once you have experience, no one cares about your degree. It's all about your knowledge, contribution. Okay. Sajid is asking, hello sir, will be appearing for base as certification. Please wish me best of luck. Best of luck, Sajid. You will crack it for sure. I hope you have done your preparation from SAS website, right? SAS is having a preparation exam. You have done your preparation from there. And best of luck. Exam is Sajid. Actually, exam is not that much difficult. Just be confident, be calm. You'll crack it easily with good marks, with good scores. Muhammad, sir, as a mechanical engineer, which field I should go for, mechanical or IT? See, now IT and mechanical is not different. IT is everywhere. See, in clinical science also, we are talking about one role, clinical science. You do a data analysis in a pharma industry or CRO industry. But what happened in mechanical analysis is less actually. It is in the top companies only, like Tesla, okay, or those who are working in the new age technologies. Technology use is less actually, not exposure is not that much. But in the IT, the companies which are providing IT services or those who are having more exposure of IT, so their salaries are like growth is more actually compared to mechanical. So I think you have to switch it. अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो you have to switch it. Being a mechanical engineer वहाँ पे grow करना है like that's kind of slow process. कर लो Sam, of course. Satish is telling yes sir, he started his journey with TCS, but he said after a year of working, they promoted some person on caste basis in Mumbai. So he left the job from TCS. After 10 years experience, he joined IQVIA in 2022. That's great. Tremendous. Priyanka is asking, hello sir, what about three companies hiring? What are the, I cannot share the name, but yeah, once our students get selected or rejected, then only I can share the name, Priyanka. Sajid, thank you, sir. Thank you, Sajid.
Jaya Kishore. Hi Shubham, I have completed my clinical science program in the algorithms. I have been applying for job, unfortunately couldn't crack. Any suggestions or guidance? Uh, Jaya, do we got connected on through one-to-one counseling or not? If not, please connect me through there. Maybe I can review your CV. Maybe I can check what is the way you are applying properly or not, how the things are going on. It needs a discussion actually. सैम सर आप सेकंड वीडियो कब लाओगे वो बस थोड़े दिनों में मुझे थोड़ा डेटा सर्च करना है स्टूडेंट्स का एक्चुअली जब मैं पहले पढ़ा रहा था ना तब मैं स्टूडेंट्स का डेटा मैंने कलेक्ट नहीं किया उनकी डिटेल्स नहीं रखी रिसेंटली मैंने स्टूडेंट्स की डिटेल कलेक्ट करना स्टार्ट की दैट इज अ प्रॉब्लम और रिसेंटली मैंने फ़ोन भी चेंज किया तो बहुत सारा डेटा जो पुराना वो चला गया जस्ट 2 वीक पहले कृति सर आप फार्मा स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं एज अ फ्रेशर उनके लिंक्डइन प्रोफाइल वाला वीडियो डालने वाले थे ना कृति रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है राइट कैन यू गेट अ जॉब विद फार्मा इन क्लिनिकल और नॉट तो वहाँ पे मैंने कुछ शेयर किया है बट इफ यू वांट द लिंक्डइन प्रोफाइल अभी रिसेंटली हमारे 3 स्टूडेंट का जो फार्मा से बिलॉन्ग करते हैं अभी उनका इंटरव्यू चालू है थोड़े दिन में क्या होगा मैं उन्हीं के साथ उनका लिंक्डइन प्रोफाइल पोस्ट कर दूंगा या तो उनके सिलेक्शन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं डाल दूंगा ओके along with their LinkedIn profiles. Saraswati, sir, this project is required to get clinical science job? Yes. You should have created some SDM, some ADAM, some table and listing for sure. Karan, if coaching is not possible due to financial problem, so sir, can I do self-preparation of such program? Of course, why not? There are multiple options. Coursera is there, Udemy is there, that are the cheap resources of learning. Okay, like let's suppose if anywhere you are going for coaching, the charge will be of course higher. But in Coursera or Udemy, you can get recorded videos and the amount will be less. But yeah, like you need to focus more. And the another problem is you will not get any guidance. So make sure you are getting guidance from any working professional. Okay. So clinical SaaS, this comes under IT and TCS is used. See, clinical SaaS, the role clinical SaaS, you'll be working on software only. Okay, so if any of the role you're working like you're doing data analysis or these things, so that will comes under their IT department only. Not IT department, but in pharma industry, this is called biometric. Okay, so you are going to work in any company, TCS, Accenture, and many other companies, service provider. So in that also it will come in on IT only, and in pharma also. Mohammed, I feel this is enough, but connect with some working professional. Just ask them what are the questions they ask, how many rounds are there, which are the company hiring actively on this role. So the guidance will help you more, I believe. But I feel this much is enough for now. Saraswati, sometimes from our past students who got selected in different companies, sometimes from my like students who are like recently completing the course from me and they are like actively looking for jobs, right?
In the session, I guide them how to figure out jobs properly, how to apply for jobs. Sometimes they got some interviews through some XYZ referrals, and then they tell me, "Sir, I got an interview. I'm having this interview," kind of. So from these resources, I get to know. Bhushan is telling, "Sir, I want to prepare just for project where I'll get. Please suggest." Mm, Bhushan, you can connect to me. Maybe I can guide you. So I think guys, आज के लिए लाइव काफी हो चुका है. हमने काफी अच्छा सेशन ले लिया है. It's been 1 hour. So if you don't have any questions, no more questions, we can wind up the session for now. और फिर हम next Saturday को वापस लाइव आएंगे. Let's take some pending questions quickly. Nitesh sir, how can we get real-time projects and prefer practice के लिए this our website? Nitesh, अभी तो कहीं वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, but let me check. Okay, maybe next Saturday I can tell you something. 1 month, Sam. Satish is asking, sir, do different companies have different interview strategy? That might be the case, but see, in the end, they are going what they are believing that what they want from you. You need to know what are the requirements on this role. That is nothing but the knowledge of SDM Adam table listing along with SAS base and advanced. These are the specific requirement. You need to have SAS base advanced clinical and SDM Adam table listing, which comes in clinical only. If you have knowledge of these things, that's enough. Now it doesn't matter like how which strategy they are going, like which the strategy they are applying to take interviews. Okay, there can be additional layer if that is a mass recruitment, they can take aptitude as well. We should prepare for a little bit aptitude as well. Hope you got the clarity, Satish. Sani Babu, sir, if there any bond in any company, is that good one? See, if you are fresher, if you don't have multiple options, Sani, just go for the job. Get the job. Get the experience. Once you get the experience, sky is the limit. Don't worry about the bond. Preeti, sir, from pharma background, so it is enough to learn only clinical SAS for getting job in pharma industries. You might need to learn more technical things. See, what I believe, as per the current scenario, if you have SAS-based advanced and clinical knowledge, clinical SDM, Adam table listing, that's enough. Okay, you should ensure your communication skill is also good, and along with the English speaking part. So that's enough, I feel, if you have this much knowledge. Sam, a lot of people are asking about project. Now I'll try something. कि ये project का क्या किया जा सकता है? क्या मैं available करा सकता हूँ कम फीस में project? ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या? I'll try something. Ramiz Raja. Hi bro, I have completed my M Pharma in 2015 previously. I'm working as an assistant professor recently. See Ramiz, if you're not getting interview as a fresher, then if you think that is good for you, surely you can. Okay. But ensure it if you're putting 1 2 year of fake experience, you are having that knowledge. That's the only thing. Personally, I don't support this fake experience, but I'll not stop it. If you feel something is better for you, then you can surely try. But yeah, the only concern is if you're putting 1 year, you should ensure I'm having good enough knowledge. If not 100%, like 1 year, then at least 80% or 70 minimum.
एज पर माई इन्फॉर्मेशन देयर माइट बी मैनी, बट मुझे जो पता है जहाँ मेरे स्टूडेंट के इंटरव्यू चल रहे हैं वो है 3। हे अभिषेक, हाउ आर यू? श्योर सैम। हे उपेंद्र, आई एम गुड, हाउ आर यू? रमीज, ओपनिंग्स आर देयर, बट कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड ले लिए हैं, वो सेकंड राउंड लेने वाले हैं। कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी सीवी सेलेक्ट कर लिए हैं, वो इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। और एक ही कंपनी ऐसी है जो अभी शायद इंटरव्यू ले रही है। एज पर माई नॉलेज देयर कैन बी मेनी, बट जो मुझे पता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज ओनली। ठीक है, सो गाइज अभी के लिए ये लाइव डिस्कशन खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक यू एवरीवन being with me till 11 p.m. And guys, एक बात, I cannot talk about short term what is going to happen with you, but in long term, I believe देखो हर चीज की जर्नी होती है, because I belong from mechanical, right? I belong from non-technical field. I got job on this role, and we all have our different journeys. हम सभी की जर्नी डिफरेंट होगी, बट 90% लोगों की 80% लोगों की जर्नी सेम होने वाली है। 20% लोग ऐसे होंगे जिनकी जर्नी स्मूथ होगी। 80% लोगों की जर्नी रफ होने वाली है, दैट आई एम लाइक आई एम श्योर अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज़ द डिमांड ऑफ सप्लाई। आज के टाइम पे जितनी डिमांड होती है किसी भी जॉब की, तो सप्लाई उससे ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज़ अगर 30 ओपनिंग्स हैं, तो उसके पीछे 100 लोग हैं। दैट इज़ द थिंग। तो आपकी जर्नी जो डिमांडिंग रोल्स है उसमें ईज़ी तो नहीं होने वाली, आपको टाइम लगने वाला है थोड़ा-सा। बट क्या इतना डिफिकल्ट है कि आपको जॉब नहीं लगेगा? ऐसा नहीं होता कि आपको जॉब नहीं लगेगा। फॉर श्योर यू गोना गेट द जॉब, बट यू हैव टू स्ट्रगल लिटिल बिट। आपको टाइम लगता है, इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं होते हैं, इंटरव्यूज़ नहीं मिलते हैं बिगिनिंग में, शायद कुछ क्वेश्चन्स का आंसर नहीं कर पाते हो, कई बार नहीं पता चलता कि इंटरव्यू कैसे निकल रहा है। दीज़ ऑल ऑफ दिस थिंग्स गोइंग टू हैपन इन द बिगिनिंग, ओके? फॉर श्योर। But you need to remember this is a journey. This journey helps you to filter. It is like filtering yourself, getting better day by day, month by month. Okay. Okay. Chalo. Mohammed, I belong from UP, but as of now, I'm living in Vadodara from last 20 years in Gujarat. So, Mohammed and everyone else, let's end this live discussion. I hope you got some knowledge. If yes, do like this video and let's meet on next Saturday with some new information. मे बी तब तक कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन कंफर्मेशन आ चुका होगा, तो मैं आपको कंपनीज के नेम भी शेयर करूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। चलो मिलते हैं गाइस, बाय बाय। सैम, शॉर्ली आई ट्राई, हफ्ते में 2 बार लाइव करने का ट्राई करेंगे जरूर, फॉर श्योर। जल्दी मिलते हैं, लास्ट सैटरडे से पहले मिलेंगे। बाय बाय गाइस।